कल्चर में देखिए, वी आर हिंदू कल्चर इज कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स ओनली। भाई दूज, रक्षाबंधन, सब भाई बहन का एक दूसरे का ग्रेटिट्यूड है। माता पिता के अपन चरण छूते हैं, वो भी एक ग्रेटिट्यूड है। पर अपन ने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग फ्लरिश भी हो रहे हैं। या वो तो है भी, मतलब इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी हम मतलब फ्रॉम वेज अर्नर टू रिच सब अच्छे को, मुझे राजी खुशी रहे। ये हमारे यहाँ डिप्रेशन में गया है, सुसाइड हुआ, ऐसा होता नहीं, बिकॉज वी बिलीव इन गॉड। तो अच्छे दिन आएंगे, तो हमें इसलिए हम डिप्रेशन में जाते नहीं है इतनी जल्दी और सुसाइड नहीं करते। नहीं, एक इट इज अगेन अपन लोगों के लिए इट्स अ थॉट टू पॉन्डर ओवर and work upon it. Maybe we can come up with something greater. चले, I hope many people have joined, because मुझे इस पे दिख नहीं रहा how many people are there now. 11 people are there. 11 Wonderful. including We'll start. 11. I request somebody to share and read. Let's see who can help us. If anybody is willing to do, then do. Otherwise, I will. Pravina ji will do. Pravina ji will do. Great. Ma'am, before we... Yes, dear. Kishore sir was saying something about Gita. So I was listening to something on Gita, and they said he like in our culture, we, or rather in Hinduism, we believe कि soul जो है वो permanent है, body is temporary. पर हम लोग body को खिलाना पिलाना, उसको देखभाल करना सब करते हैं, but we don't feed our soul. So तब मैं जब वो सुन रही थी तो मुझे ख्याल आया कि these sessions we are doing, these sessions we are doing is actually feeding our soul. I don't know if you got the point. No, please come up again. Please repeat. I couldn't. I was listening. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. I was listening to something from Gita. Okay, and about Gita. About? तो उसमें मैं सुन रही थी और उन्होंने कहा था कि हमारा सोल परमानेंट है और हमारी बॉडी टेम्पररी है, फिर भी हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम खाते पीते हैं, उसको कपड़े वपड़े पहनाते हैं, बट वी डोंट डू एनीथिंग फॉर आवर सोल. And that time it just occurred to me, this exercise we are doing it is actually for our soul. Yes, actually. That it is actually for our soul. I mean, it changes you from, because even all of it says that you're bringing an inner change. And whenever we talk about all this, I think this is also about bringing it. So that's very how true. I relate. I thought I just shared because Kishore said something about Gita. Yeah, bilkul sahi hai. So today we are doing the magic wand. I'm sure you all are aware about what is a magic wand. सब लोगों ने हैरी पॉटर को देख लिया है. जादू की छड़ी. जादू की छड़ी, वो छोटू सी जादू की छड़ी जिससे सारी दुनिया बदली जा सकती है. जो चाहो वो पा सकते हैं वो जादू की छड़ी से. That is called a magic wand. इतना सा होता है और यूं करके दिखाते हैं. So we will read what is this magic wand. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. Yes, you see, every day we have got innumerable things to ask from our universe. Now somebody would say, why are you so selfish? कोई कह सकता है कि अपन इतने सेल्फिश क्यों हो रहे हैं, हम भगवान से ये भी मांगते हैं. जैसे कभी कभी मैं सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि मंदिर जाके भिखारी की जैसे खड़े हो जाते हैं कि भाई आप मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो.
अब यही सिचुएशन आप अपने बच्चों से देखिए, जब बच्चे हमारे सामने खड़े हैं and if they want something from us, right? I repeat, जब हमारे बच्चों को हमसे कुछ चाहिए तो हमारी पूरी कोशिश क्या होती है कि वो हम उसको फुलफिल करें, और हमें बुरा थोड़ी ना लगता है कि बच्चे हमसे क्यों कह रहे हैं, जो भी करने को होता है. One reason we should not forget, all of us जिसके पास भी बच्चे हैं, बच्चे ने नहीं कहा था कि मुझे आप इस दुनिया में लाइए, बच्चे को दुनिया में हम लाए हैं, तो हमें तो वो सब करना ही है ना. तो भगवान जी से हमने भी नहीं कहा था कि आप हमें बनाओ, हमने तो भगवान जी आपने हमें बनाया है तो हमारी सारी जिम्मेदारी तो आप ही की है ना. हाँ, ये बात अलग है कि God will help those who help themselves. That is fine. We are ready for that. But still, we would love to go and ask for whatever we want. So, if we have got a magic wand, all of us present here, 10 of us, who would not be interested to have a magic wand? Please write in chat. No. Who doesn't want a magic wand? Please write in chat. No. See, my chat is not moving at all. कुछ नहीं हिल रहा वहां पे. Great, good. So we all want a magic wand because this is life. There are many good things, but there are many things which we need a superpower, the energy above us to help us. Yes, dear. When you frequently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Very true. Today, let me tell you one thing. Today, I met one gentleman, Kishore ji ki friend hai. So, yahan Bhopal mein hai. So, today I met with that man. And then, that person, his job is to help, they are into social service. They have got, he was saying that we have helped, up till now, we have helped 45 lakh people. A big number to help. So now, and then that man, he was full of humility. When can we have that humility? When can we have that humbleness? When there is gratitude. Otherwise, if we help somebody, we want to tell 10 people, oh, you see, this is what was done by me. This, I did this. ये मेरा दोस्त है, मैंने इससे ये काम करवाया. हमको सबको बताना अच्छा लगता है. Right? ऐसे भी लोग हैं जो पता नहीं किस किस को क्या क्या मदद करके आ गए. चलिए, हम तो बोलना भी चाहते हैं, but when we do anything and there is gratitude with that, आप देखिए, there would be something more you will feel in your life. So, the vibrations that fellow emitted, they were very contagious. We wanted to sit with him for whatever time we were there for half an hour. And we talked about so many things, but still we wanted to be together. So remember, once I told you, अपन सब लोग वाइब्रेट करते हैं, तो अपने को देखना पड़ेगा कि हमारे साथ लोग बैठना चाहते हैं. That means हमारी वाइब्रेशंस अच्छी हैं. यदि आप देखेंगे कि लोग हमसे कन्नी काट रहे हैं, they don't want to sit with us. No matter I'm trying to smile, but there is something wrong with my body language, something wrong inside me which is not vibrating, and I'm not somebody who would people like to sit with me. Right? So, whenever we want to help another people, and if we have that power of gratitude, you will see your help would be power to many. Not power to 2 or 3, many. Energy flows where your attention goes, and so when you direct the energy of gratitude towards another person's need, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy.
and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. So, तो मतलब, is it easy to get this magic wand? Yes, it is easy to get this magic wand. How? Bring gratitude in the life. When we have gratitude in life, you see, my dear friends, we keep talking about it. Wherever our attention is, our energy would be there. Now, suppose today something happened and I'm not very happy about it. Now, if I'm not happy about it, where is my energy going? Where is my attention? My attention is to that, or I'm thinking about that circumstance or that situation where or which was not as per my desire. Now when I keep thinking about it, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आई, मान लिया, but अब choice है मेरे पास कि I let it go, I forget it, or I want to dwell in it. And when I dwell in it, what would happen, Praveena? You जब मैं उस, complain. हाँ जी, yes Madhu ji, Complain. yeah, when I will dwell in that situation about which I am not happy, what kind of thoughts will I attract? Negative thoughts. Yes, all negative thoughts. So what will be the impact of these negative thoughts, dear? Madhuji? Self-doubt, unhappy, not a nice person Yes. So around. according to law of attraction, the impact of this negative thought would be more negative thoughts. More negative thoughts means abhi और negative situation आने वाली है. Get ready. So dear friends, अब मुझे ये देखना है कि where is my attention going? Is it going to something positive or is it still stuck at something negative? Again, dear friends, आज हम day 24 पे हैं. Very soon we will end this book. It doesn't mean that life will change in the way that there would not be any situation which you would not like or which you don't want. So this book will help us. These practices will help us to come out of those situations. ये powerful tools हमारे पास आएंगे जब हम उनमें से निकल पाएंगे. ये बुक पढ़ने के बाद कतई भी आप मत सोचिएगा, पर हाँ, आपका परसेप्शन बहुत बदल जाएगा. तो जो वो वाली जब सिचुएशंस आएंगी, आपका रिएक्शन ना होके एक्शन होगा और वो अलग होगा. ये फर्क तो आ जाएगा. So again, let me come back to this. जहां पर attention होगा, वहां पर energy है. So now, when I am directing this good energy and it is combined with gratitude, what it will be? No less than miracle. And when there are miracles, what are we getting? अभी हमारे पास ये gratitude आ गया. As I told you, magic wand. Yes. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard. Such a nice quote. अब आप देखिए, we wait for something कुछ आ जाए. Like, for example, we wait for something great to happen so that I become happy. जबकि ये मेरे हाथ में है कि मैं हैप्पी कब और कैसे हो. यदि ऐसा होता कि दूसरे लोगों के पास ये पावर है, तो फिर सब लोग एक दूसरे को हैप्पी क्यों नहीं कर देते? राइट? सो दिस चाबी, ये चाबी तो मेरे पास ही है. So when I can make myself happy. So in the same way, we wait कि something else would happen. Some magic wand would be there which would change. अभी आप मुझे बताइए, my dear friends, ये जो सारी practices आपने सीखी, मैंने सीखी, इससे क्या बदलेगा? Situations बदलेंगे ना, हम हमारी चीजें बदलेंगे ना, और बदल भी रही है हमारे लिए. तो क्या हम अब वो हम कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? तो अब मैजिक वॉन्ड मैं हूं कि कुछ और है? हम है मैजिक वॉन्ड. एंड वी फेल टू सी दैट कि हम किसी मैजिक वॉन्ड से कम नहीं है. व्हेन वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड और व्हेन ग्रैटिट्यूड इज अवर वे ऑफ लाइफ. अगेन, हम लोग बहुत जल्दी डाउट पे आते हैं. वी हैव टू टीच आवरसेल्व्स
not to doubt ourselves. Situations हर तरह की आएंगी. We have to learn, use practices and get over. Right, dear ones? So don't forget, you don't need, or we don't need any magic wand. We ourselves are magic wand. We can change whatever we want. हाँ, ये हो सकता है my dear, कि कोई चीज थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएगी. Don't give up. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. कैसे करेंगे हम? Anybody? If you feel your loved one, any of these things has happened, what would you do? विजुअलाइजेशन की सब सही हो गया. विजुअलाइज होंगे कि सब सही हो गया है. अब आप बोलोगे सब सही हो गया है, तो क्या ये स्पेसिफिक है कि आप कहेंगे कि मैं विजुअलाइज करूंगी कि एक पर्टिकुलर चीज लेके कि मेरा ये सही हो गया है? पर्टिकुलर चीज लेके करें. पर्टिकुलर चीज करके कभी भी आप कहेंगे सब सही हो गया है, आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चेंज करना है. व्हाट इज माय आस्क? अपन बार बार ये एग्जांपल लेते हैं ना. मुझे उमेश जी नहीं पता है कि नहीं, एक बार इन्हीं की BMW के ऊपर बात निकली थी कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो थोड़े दिनों में मेरी मैनिफेस्टेशन में ट्रक आ गई मेरे पास. चाहिए तो मुझे बड़ी गाड़ी के रूप में कौन सी थी? BMW. पर मैं क्या चाह रहा था? बड़ी गाड़ी. आ गई ट्रक. तो इफ मैं स्पेसिफिक नहीं हूं, अब मैं अपने यूनिवर्स से क्या मांग रही हूं? सब. अब यूनिवर्स को क्या पता क्या सब है भाई, क्योंकि ये सब जो वर्ड है ना, हर किसी का डेफिनेशन अलग है. किसी के लिए सब में एक मकान है, एक छोटी सी गाड़ी है. किसी के लिए सब में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े जॉब है. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सब, राइट? सो इसलिए व्हेन आई हैव एनी ऑफ दीज सिचुएशंस, हाउ कैन आई चेंज इट? वी हैव गॉट एन इनविजिबल फोर्स. हमको दिखता नहीं है. तो आप कहोगे दिखता नहीं है तो कैसे है? आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है, नहीं दिखती आपको इलेक्ट्रिसिटी, राइट? बट आप उस बटन को ऑन करते हैं तो वो चालू हो जाती है लाइट. यू कैन नॉट सी. सो दिस वे वी हैव गॉट एन इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो हमको हेल्प करेगा अपने लव्ड वंस की हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को चेंज करने के लिए. आपने ये भी पढ़ लिया कि ग्रैटिट्यूड जो चीज हो गई है सिर्फ उसके लिए नहीं है. आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसके लिए आप विजुअलाइज करिए. मैं मेरे बच्चे की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती हूँ, तो ये अभी आपके बच्चा गया नहीं है, बट आपने अभी से उसको विजुअलाइज करना शुरू करके थैंक यू भी बोल दिया है. यू कैन ऑलवेज गेट इट. सो इन अदर वर्ड्स, आपको जो चाहिए आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, दैट विल बी देयर. सो आप कैसी मैजिक वॉन्ड से कम है? To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic word thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. Yes. Now, like we keep hearing, right? So and so of that person is not well. So now, in this case, when we are talking about somebody's health, for example, हमारे family member, हमारे close ones, हमारे friends में
किसी की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, अब उस केस में क्या करेंगे, हमको वो विजुअलाइज करना है कि उसकी, आप क्या विजुअलाइज करना चाहते हैं कि उसकी वो इलनेस खत्म हो गई है, और आपको विजुअलाइज ये नहीं करना है कि वो खत्म हो गई है, आपको उसको ग्रेटिट्यूड को भी लाना है कि यू आर सो ग्रेटफुल एंड यू आर सो हैप्पी दैट यू हैव गॉट दैट, रिसीव दैट न्यूज कि हाँ दैट पर्सन हैज बीन क्योर्ड। अब अपन खुद ही डाउट करने लगते हैं, जब हुआ नहीं है तो कैसे सोच लूं, तो जब मैं हुआ नहीं है कैसे सोच लूं तो फिर होगा भी नहीं। यही तो ग्रेटिट्यूड है, और कौन सा ग्रेटिट्यूड है, यही ग्रेटिट्यूड है माय डियर फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू रियली थिंक दैट द पर्सन हैज रीस्टोर्ड व्हाटएवर द हेल्थ इशू इज एंड विजुअलाइज हाउ वुड योर रिएक्शन बी। अब आप देखिए, सपोज मेरी मम्मी की तबीयत जब खराब थी, और यही जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे बहुत टेंशन था। अब यदि मैं उस टेंशन में, आप मुझे कहेंगे कि आप विजुअलाइज करिए कि आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं आपसे गुस्सा करके बोलूंगी ऐसे कैसे कर लूं, तो फिर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते तो होगी भी तो नहीं ना। Yesterday we were talking about something, क्या, if you can change something, why worry? If you cannot change something, why worry? Right or not? As simple as that. Yes, dear. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. Yes. You can think about somebody's physical health. You can change your, for example, you want that your child should be rich. How can you do that? Just be in gratitude. Visualize that the person got this and this wealth. Simple. I'm sorry, my dear friends. अभी आप लोगों को बहुत तेज आवाज आने वाली है। मेरे पास से कोई शादी का प्रोसेशन निकलने वाला है। अभी तक मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है, तो प्रवीणा keep reading it, my dear, because मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Yes, it is not only you can think about. Can you all hear the music? No? Right? Good. We can't. So, we can always change the person's health, wealth, and happiness. So, it is health, wealth, or happiness, whatever you want to change easily. Yes, Pravina. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photograph in front of you while doing this practice. What is the practice? You have to take the photograph of 3 persons, right? And then work on that. Let us read how. Take the first person, hold their photograph in your hand, and then close your eyes for 1 minute, visualizing yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. Yes. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abandoned again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Such a nice thing. You can take the photograph of 3 people, taking one by one, whatever circumstances or the situation you want to change. You just visualize that, thinking that thing that it has gone and you have received the news.
And this is how you just have to visualize. It looks very simple. As I'm saying, I'm using the word just visualize. But unless and until we don't start doing it, we are not able to get into it. बहुत simple है my dear friends. आपने बचपन में टेबल टेनिस खेला था, बचपन में आपने खेल लिया और जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे थे आपने छोड़ दिया. वो टेबल टेनिस जिसको आप घंटों रोज खेलते थे और अब आपने सालों से नहीं खेला है. Do you think so? You will play it with the same finesse or the same expert hands as you did it when you were doing it every day? No, It is we something have very to simple. practice again. Yeah, such a small thing as a table tennis. ठीक है. और Okay. आप सोच, Yes. हरीश सर कुछ कह रहे हैं? Yes. नहीं, वो मिस्टेक है कि अनम्यूट हो गया शायद. अच्छा. So if we are not getting into visualization, आपने अभी तक 24th day है हमारा. यदि हम रोज विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं और यदि मैंने उसमें करने की कोशिश स्टार्ट नहीं करी है, तो डियर फ्रेंड्स अपन को उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एक छोटी सी चीज के लिए करने के लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए, तो आखिर इन सब चीजों को आपको लगता है प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? कभी कैसा होगा, कभी कैसा होगा. To get into it, we need to do it. So start doing it if you have not started. Right, dear? Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth or happiness or whatever combination they need. Thank Yes. you. Thank you. Thank you for the person's name, health, wealth or happiness. Yes. Now, ये सबसे बड़ा एरिया तो यही होता है. किसी भी चीज के लिए आपको या तो वो हैप्पी नहीं होता. The circumstance, situation can be anything, but the person is not happy. Let me give you one example. आपके बच्चे का पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है, you are not happy. For example, आपके घर में प्लम्बर की जरूरत है, बहुत दिन से बुला रहे हो, प्लम्बर नहीं आ रहा है. Small thing, you are not happy. So it is not that what is it? It is that you are not happy. The person is not happy. So we are visualizing that the person is very happy. We are sending it all the gratitude to the universe for making that person happy, healthy, wealthy. Any combination. Now suppose you find that the person is healthy, but the person doesn't have money. So what will you visualize? That is, the person has got a lot of money. Now the person has got happiness, but the person doesn't have, or a person doesn't have health and wealth. उसको physically भी कुछ challenge है और उसकी financial help उसको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है. So we can always use this combination. Thank you, thank you, thank you for उस person का नाम, health, wealth or happiness, or we can send health or wealth, whatever the combination is. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you finish the magic wand practice by sending health, wealth or happiness to all 3 people. Yes, do one by one. You all know how to do it. Do one by one for all the 3 people. Remember, dear friends, you cannot do it कि आज सुबह को मैंने एक के लिए कर लिया, दिन को मैंने दूसरे के लिए कर लिया, शाम को एक के लिए कर लिया. Gratitude सी पे नहीं होगा. आपका हार्ट और आपका माइंड दोनों सिंक ही नहीं करेंगे, उस चीज को करना नहीं चाहेंगे. एक करेगा तो दूसरा आपके साथ द्वंद करेगा, नहीं, कैसे पॉसिबल है? Therefore, we have to do all these 3 together. You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. अभी अपन लोग कल बात कर रहे थे ना, शुरुआत की 12 प्रैक्टिसेस हम ग्रेटिट्यूड को लर्न करने में लगाते हैं, फिर बाकी शायद 8 के और प्रैक्टिसेस हैं, नहीं उसके बाद 8 कुछ प्रैक्टिसेस हैं, तो हम उसको किस चीज में लगाते हैं? हम उसमें मैनिफेस्टेशन में लगाते हैं,
फिर जब हमारा मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाता है, हम अपने लिए कर लेते हैं, फिर बाकी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरों के लिए करने में लगाते हैं, राइट? अब आप देखिए, आप अपने लव्ड वंस के साथ नहीं कर रहे हैं, you are walking on the street, and what can you do? You can do for the people, as if there is a magic wand, and you are no less than a magic wand, my dear friends. If you have the power of gratitude in your hand, then you just are no less than a magic wand. So if you find a person is not happy, you can just be in gratitude, visualize for that person to be happy. If you feel that person needs little help because of the financial challenge, do for that. Just go on and do it. Yes, dear. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. वही वाली बात याद आ गई कि आप जब दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं तो प्रेयर अपने आप आपके लिए हो जाती है। मुझे आज ही एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई जिनके साथ में शाम को थी। उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, ब्यूटीफुल स्टोरी इट वाज, that there was a prostitute who was going with her friend or a boyfriend. She was walking with a white sari, and there was another man, a very जो भगवान की बहुत प्यारे होते हैं, जो फकीर होते हैं, तो वो तो किसी भी वेश में होते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वो आदमी एक ही लाइन बोलता था, मुझ में भगवान और मैं भगवान में, राइट? अब उससे क्या होता था, वो सारा दिन चने खाता था और यही लाइन बोलता था। तो आप सोचो उस इंसान की अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी कैसी थी। He was not bothered what am I wearing. He was connected to that power. तो जब उस लेडी के कपड़ों पर छींटे पड़ गए और जो आदमी उस लेडी के साथ था, उस आदमी ने इस आदमी को खूब मारा। तो चलते चलते जो उस लेडी के साथ आदमी था ना, वो धीरे धीरे काला पड़ता गया। तो उस प्रोस्टिट्यूट को समझ में आ गया कि जिसको इसने मारा है वो भगवान का कोई पावरफुल बंदा है। तो वो दौड़ी दौड़ी गई उसके पास और हाथ जोड़ के बोली कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो उस बंदे ने कहा कि जब आपके कपड़े पर इतना सा छींटा था तो वो जो आदमी आपके साथ था उसको पसंद नहीं आया, तो मैं जो उस परवरदिगार का, उस भगवान का बंदा हूं, जब उसे कोई इतना मारेगा तो भगवान उसको छोड़ देगा, राइट? तो आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो, आपके लिए अपने आप ना हो जाएगा? तभी तो कहते हैं अपन के इस ग्रेटिट्यूड में एक और चीज कहते हैं, नॉट ओनली फॉरगिव अदर्स, बी वेरी काइंड टू अदर्स। व्हेन वी आर काइंड टू अदर्स, द यूनिवर्स विल एंश्योर कि हमारी लाइफ में कैसे भी, कौन भी वो काइंडनेस ला रहा है, वो काइंडनेस हमारे को रिटर्न होगी। क्यों? क्योंकि whatever you will give to this world, it will give back to us. So when we are using this magical wand of gratitude for other people, for their health or for their wealth or for their happiness, don't you think so your life would also change without you focusing on your life? This is what would happen. Such a beautiful thing to do. Yes, dear. जैसे कहते हैं ना, आप दूसरों को सुगंधी फूल देते हो तो सुगंध आपके हाथ से भी आती है। हाँ, बस क्या बात कही प्रवीणा जी, बहुत खूबसूरत। Magic practice number 24. The magic wand. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you. And feel Yes, dear ones. One second. My dear friends, let me remind you again. जब आप ये 10 gratitude लिख रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। 1, you are able to notice all the great things in your life.
तो जब आपको ये देखना आ जाता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो जो थोड़े वीकर सेक्शन से वहां ध्यान नहीं जाता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या देगा? वैसी वाली सिचुएशंस जो आपके लिए अच्छा करती जाएंगी। सेकंड, व्हेन यू राइट ऑल दीज थिंग्स, जब अपन लिखते हैं ना, तब हमारा मूड कितना चेंज हो जाता है। आप वापस से कल देखिएगा, जब आप लिख रहे हैं योर मूड चेंजेस, योर मूड इज लिफ्टेड। उससे क्या होगा? व्हेन योर मूड इज लिफ्टेड, जब भी आप गलती होंगे, what will happen? You can always go back. You can always go back to this list of yours and just release that thing from your life. Yeah? एक और चीज याद करिएगा my dear friends, आज जो आपके पास है, ये सब चीज कभी ना कभी हमने अपनी लाइफ में चाहिए थी, इसीलिए अभी हमारे पास है। अब वो हमें याद है कि नहीं, that is another story. बट आज हमारे पास जो भी है, ये हमने कभी ना कभी चाहा था, राइट? नंबर 2, yes dear. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Third, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Yes, you have to, very simple. It is not that your family members, you have your choice with whatever you want to choose. But you have to choose 3 people with the photographs of each people, and then इंटरनेट क्लोज कर। please mute yourself, dear friends. मेरी मजबूरी है, इससे मैं तेरे को 8 से 9 टिकट कराती ताकि तेरे खाली दिमाग में कुछ भूल जाए। Purnamji, कौन है? Please mute yourself. Yeah, she muted. Yes. Okay. Open your eyes. Okay. No, Take third, one fourth one. Yeah. photo. Take one person at a time and hold their photographs in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Yeah. So you have to visualize that. What are you to visualize? You have to visualize that the other person has received whatever is missing. And then you have received also the news that this thing has changed. This is what we have to visualize. Right? Yes. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for the person's name, health, wealth, or happiness. Why do they ask us to close our eyes? You see, जब आप भगवान के सामने भी खड़े होते हैं, आप कल देखिएगा यदि आपने कभी इसको नहीं देखा है तो, जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं, जब भी आपका समय है, आप जब आंखें खुली करके प्रेयर करते हैं और जब आंखें आप बंद करके प्रेयर करते हैं, फिर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कल बताइएगा. हाउ डू यू फील? व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस? सो इस वाली प्रैक्टिस में भी हम क्या करेंगे? वी विल क्लोज आवर आईज and we will say thank you, thank you, thank you. For example, I can give you an example. Thank you, thank you, thank you, Kaikali. Thank you, thank you, thank you for Ruchi's health, wealth, and happiness. 6. As you finish with one person, move on to next person and follow the same with 2 steps until you are finished the magic wand practice for all 3 persons. Yes, as I told you, to understand that gratitude, not only understand, to be in that feeling of gratitude. You will, it is mandatory that we do it all 3 together, giving specific time to 1, 2, and 3. Yeah. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, that our beautiful magic wand practice. You see, I have come to this naturopathy center and then I find so many people struggling with the sleep. There are so many people who need an external, you can say, and something to sleep well. And that sleep is also not sound.
And just because, and then when they teach us, they have given us a lot of information. And then I got from that information that most of the diseases one has is because one cannot sleep well, or one doesn't sleep for enough time. Right? तो रात को सोने से पहले magic wand practice करेंगे for the best thing that has happened. So if for that आप देखिए वापस से visualize करेंगे क्या क्या अच्छा हुआ, और जब आप वापस से उसको visualize करेंगे तो आप देखिए you are reliving those moments. So beautiful. Beautiful. Yes. I'm sure a beautiful, yet another beautiful practice we have learned. Isn't it, dear friends? Yes, ma'am. Yeah. So anything you would like to share? Yes, ma'am. Yeah. I'd like to show you something. Yeah. Ha, magic wand. Yes, ma'am. Manali, wonderful. I have my mobile in my hand, else therefore I cannot clap. Thank you. Wonderful. Wonderful. You see, even I, when at my home, I did with one pencil. I took one pencil and I joined one another thing, beautiful thing. वो जिसके ऊपर अपन वो post करते ना, those post-ons. Okay. So, and with that, I made a magic wand. And then, I really had that feeling, oh, I've got a magic wand in my hand. So, dear friends, we all need all these things. Just show everybody again. Yes, ma'am. This is her magic wand. She has made this magic wand, or she's got it. Whatever it is. Beautiful. Keep it up, my child. Thank you. Wonderful. Yeah. Wonderful. She herself is magical. No doubt. No doubt. No doubt. So, anything else would like to share, anybody, my dear friends? Any question? You would need any clarification, any doubt? No? Nothing much to say? Okay, that's great. So the mind is now ready to sync with the idea of gratitude, looks like. And all are ready, steady, and go to get this practice done. Wonderful. Great, my dear friends. So in that case, when we don't have anything else, we'll wind up our class here. See you tomorrow, same time, 9 o'clock. Thank you. Thank you so much, dear ones. Bye-bye.